Hey guys, welcome. In this video, we're going to discuss about how to set up the e-commerce data to Google Analytics 4 with the help of GTM. GTM की हेल्प से हम इस चीज़ को देखेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट का ई-कॉमर्स डेटा गूगल एनालिटिक्स 4 में ट्रांसफ़र करोगे विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर। और इसके लिए गाइस क्या होता है कि गूगल एनालिटिक्स में बाय डिफ़ॉल्ट वो आपकी वेबसाइट का डेटा ट्रैक करता है इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स, बट ई-कॉमर्स डेटा वो बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैक नहीं करता। उसके लिए हमें कुछ इनपुट्स देने होते हैं, जिन इनपुट्स के बेसिस पे आपकी वेबसाइट का ई-कॉमर्स का डेटा गूगल एनालिटिक्स 4 में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब ये डेटा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि आपकी वेबसाइट पर जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, बेस्ड ऑन दोज मार्केटिंग एक्टिविटीज़, क्या आपकी वेबसाइट पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितने परचेसेस हो रही हैं, कितने लोगों ने कार्ट में ऐड किया है, कितने लोगों ने पेमेंट इन्फो ऐड करी है, कितने लोगों ने आइटम को व्यू किया है, कितने लोगों ने रिफंड लिया है, वो सारा डेटा आपको अपनी एनालिटिक्स में चाहिए होता है, सो डैट यू कैन सी कि आपकी ई कॉमर्स वैल्यू क्या है, ई कॉमर्स परचेसेस कितनी हुई है। जैसे अभी एक कुछ मैंने एकदम न्यू गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बनाया है और वहाँ पर आपके पास इस टाइप से कुछ डेटा होता है ई कॉमर्स परचेज को लेके। ठीक है, यहाँ पर अभी कुछ भी डेटा नहीं है। तो इस वीडियो में हम वही सीखेंगे कि कैसे आप गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से ई कॉमर्स को सेटअप करोगे फॉर गूगल एनालिटिक्स 4, और कैसे वहाँ से डेटा आप ट्रांसफ़र करोगे फ्रॉम योर वेबसाइट टू गूगल एनालिटिक्स 4 विद द हेल्प ऑफ GTM। गूगल एनालिटिक्स 4 में कुछ रिकमेंडेशन होती हैं कि किन किन इवेंट्स को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, किन किन इवेंट्स को आप ट्रैक कर सकते हो, जो यहाँ पर आपका जो गूगल का सपोर्ट है वहाँ से आप देख सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि गूगल एनालिटिक्स 4 में किन किन चीज़ों को आप ट्रैक कर सकते हो और उनके क्या पैरामीटर्स होते हैं। इवेंट्स गाइस आपको जैसे गूगल ने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इन्हीं लेबल्स के बेसिस पे आपको वहाँ पर इवेंट्स ट्रांसफ़र होते हैं, डैट यू हैव टू ट्रांसफ़र विद द हेल्प ऑफ GTM। तो चलो एक बार देख लेते हैं कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आपका जो गूगल एनालिटिक्स 4 है वो आपके GTM से लिंक होना चाहिए, GTM आपकी वेबसाइट से लिंक होना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक न्यू ट्रिगर चाहिए और उस ट्रिगर को हम सेटअप करेंगे सो डैट वी कैन सेटअप द ई कॉमर्स डेटा। अब गाइस डिपेंड करता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो वेबसाइट किस प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है। अलग अलग वेबसाइट्स के लिए अलग अलग प्रोसेस हो सकता है कोडेड प्लेटफॉर्म पर हो सकता है शॉपिफाई पर हो सकता है कुछ और प्लेटफॉर्म्स हो। तो उसके लिए क्या होता है कि गूगल एनालिटिक्स का ही या फिर गूगल डेवलपर की साइट से आपको ये कोड्स इंटीग्रेट करवाने होते हैं ताकि आपका जो डेटा होता है वो डेटा टू द पॉइंट वहाँ पर ट्रांसफ़र हो। तो अगर आपकी वेबसाइट किसी और प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है तो वहाँ पर गाइस गूगल डेवलपर का यहाँ पर एक पूरा गाइड है, इस गाइड का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पर आप किस आइटम को या फिर किस पर्टिकुलर इवेंट को आप ट्रैक करना चाहते हो वो सारे यहाँ पर कोड्स हैं। इन कोड्स को आपको अपनी वेबसाइट में प्लेस करवाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट। ठीक है, जो आपका डेवलपर हो या फिर जो एक्सपर्ट हो वो इन कोड्स को यहाँ पर आपकी वेबसाइट पर प्लेस करेगा और जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को वो रिप्लेस कर देगा, बिकॉज ऑल दीज वैल्यूज़ आर वेरिएबल्स। वो वेरिएबल्स क्योंकि हर प्रोडक्ट का ये डिफरेंट होगा। तो अगर आप देखोगे ऐड और रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ शॉपिंग कार्ट, उसके लिए कोड था पूरा। इसके अलावा इनिशिएट द चेकआउट प्रोसेस, इसके अलावा अगर आप देखोगे मेक अ परचेज और इश्यू अ रिफंड, तो यहाँ पर ये पूरा कोड है जो आपको ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम योर वेबसाइट टू द गूगल टैग मैनेजर एंड देन फ्रॉम गूगल टैग मैनेजर टू योर गूगल एनालिटिक्स वेबसाइट। ओके, तो चलो विल बी यूजिंग द वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म एंड हाउ टू डू दिस विद द हेल्प ऑफ द वर्डप्रेस। तो उसके लिए सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में गूगल टैग मैनेजर लिंक नहीं है तो मेक श्योर कि आप गूगल टैग मैनेजर को सबसे पहले लिंक करो। और लिंक करने के लिए देखो दो तरीके हैं, या तो गूगल टैग मैनेजर अपना जो कोड देता है वो कोड के थ्रू आप लिंक कर दो कि यहाँ पर आपका हेडर सेक्शन और बॉडी सेक्शन में आपको ये दो कोड्स प्लेस करने हैं, जावास्क्रिप्ट कोड्स, एंड देन गूगल एनालिटिक्स विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग द डेटा। बट एट द एंड यू हैव टू ट्रांसफ़र द ई कॉमर्स ऑल्सो। तो आई रिकमेंड कि आप सेकेंड प्रोसेस फॉलो करो जो मैं बताने वाला हूँ। देयर इज़ अ प्लगइन known as Google Tag Manager for WordPress GTM 4P। इस प्लगइन को आप यूज़ कर सकते हो, दिस वन। इस प्लगइन को आप यूज़ करो और इस प्लगइन को यूज़ करने के बाद जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेते हो, इंस्टॉल करने के बाद व्हाट यू कैन डू इज़ let me show you, let me just log into my website so that I can show you। ऑलराइट, तो जब आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपने इस जाना है प्लगइन्स में ऐड न्यू, और ऐड न्यू में जाने के बाद यू हैव टू सर्च फॉर गूगल टैग मैनेजर फॉर वर्डप्रेस और GTM 4WP। GTM 4WP, you have to search this plugin
एंड इस प्लगइन को आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर देना है। मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल होके एक्टिवेट है बाय थॉमस टीजर। तो ये प्लगइन आपको इंस्टॉल कर देनी है। फाइनली जब ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाती है देन यू हैव टू कम टू द सेटिंग एंड देन यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर का एक ऑप्शन है, आपको इस पर आना है। देन यू हैव टू प्लेस योर ID, द गूगल टैग मैनेजर ID, just see this one, GTM WGKTKZZ. So this ID you have to place over here, and then we have to integrate the WooCommerce or the e-commerce platform with Google Tag Manager so that it can start sending the e-commerce data to the Google Tag Manager. Come to the integration, come to the WooCommerce, and then there is an option track enhanced e-commerce. Make sure to check this box so that the e-commerce data will also get transferred from your website to the Google Tag Manager. Just check it and then save it. Okay, I think this step is done. ये स्टेप आपको कर लेना है। अब ये स्टेप करने के बाद व्हाट हैपेंड, जैसे ही आपकी वेबसाइट ओपन होती है, तो लेट मी शो दैट व्हाई वी आर डूइंग दिस, बिकॉज इट विल स्टार्ट सेंडिंग द डेटा। लेट मी जस्ट लॉग आउट फ्रॉम हियर and let me just come to the home page. Now let me just make a preview. Alright, so tag assistant is connected, and now let me just click on any of the course. So these are the dummy courses, guys. These are not the complete courses. These are the dummy courses, and there is nothing inside it. So let me just add it to cart, and then proceed to checkout. Then it will going to ask me some information about it, and let me just show you in the tag here. If you can see the begin checkout process, you can see the API call, that is a data layer, and in data layer we are getting the e-commerce value as 4999 that was there in the product box, the product page, the product name, the price of that thing. And now this is a data layer, and we want to transfer this data layer to the Google Tag Manager so that Google Tag Manager will start sending this data through the Google Analytics in terms of e-commerce, and we will start getting the data over here that how many persons or how many items are viewed on our website, how many items are added to the cart, how many items are purchased, what is the total revenue we are getting from the website. So right now it is not created, it is not created by default, that we have to do it manually. Okay, so this data we want to transfer. Clear? So let me just clear on it, and then it is done, and let's just close it. So now let's come to the point. Now first thing you have to do is you have to create a new tag. आपको एक new tag create करना है, and new tag के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक new tag हम create कर लेते हैं. Let me just close it first. It is asking for the submit. Create a new tag, and then यहाँ पर I am creating e-commerce purchase. ठीक है, we are creating a new tag for the e-commerce purchase so that e-commerce data, because we are not specifically tracking the purchase thing. हम सारे डेटा ट्रैक करना चाहते हैं, कितने लोगों ने व्यू किया है, कितने लोगों ने कार्ट में ऐड किया है, कितने लोगों ने प्रोसीड टू चेकआउट किया है, कितने लोगों ने परचेज किया है, कितने लोगों ने रिफंड किया, उस टाइप का सारा डेटा हम यहाँ पर ट्रैक करना चाहते हैं. क्लियर? तो come to the tag configuration, then use Google Analytics GA4 event, then choose the GA4, and now here is the event name. Either you can enter it manually और यहाँ पर आप variable choose कर सकते हो. Click on this thing and you will be getting an option of event. You might not getting all the options क्योंकि मेरे already भी जो tags हैं वो setup हैं, इसलिए इतने सारे options हैं. I'm choosing the event, and then come to the advanced settings, come to more settings and click on send e-commerce data, and data source is data layer. Clear? Just do it till now. Then come to the trigger part, that when this tag will going to trigger, मतलब ये जो tag है ये tag कब data send करना start करेगा, means जब कोई कौन सी condition met हो, जब ये data send करना start करे, मतलब ये जो tag है ये data send करना start करे. Come to the trigger, and here we have to create a new trigger because we do not have to fire it for every event. We have to fire it on the particular conditions. So e-commerce data trigger, let me just name it. Then come to the trigger configuration, and here choose the custom
events because we are firing this trigger on a custom event. Choose custom event. Now here use the event name. Now what are the event names? Event names जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि गूगल एनालिटिक्स 4 में कुछ प्री डिफाइंड इवेंट नेम्स होते हैं जो हमको ट्रैक करना है और उन ट्रैकिंग के बेसिस पे हमें उसका नेम देना होता है, ठीक है। तो हेयर दीज आर दोज इवेंट नेम्स दैट वी वांट टू ट्रैक: ऐड पेमेंट इन्फो, ऐड शिपिंग इन्फो, ऐड टू कार्ट, ऐड टू विश लिस्ट, बिगिन चेकआउट, जनरेट लीड, परचेज, रिफंड, रिमूव फ्रॉम कार्ट। सो अब इसमें से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन कौन से इवेंट्स हैं जिनको ट्रैक करना है। अब गाइस यहाँ पर एक हैक है, यहाँ पर एक टाइम पे आप एक ही इवेंट ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज आपको परचेस करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर परचेस लिखना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू सेव दिस इवेंट। देन सेकंड पे आपको ऐड टू कार्ट करना है तो ऐड टू कार्ट लिखना पड़ेगा। देन यू हैव टू सेव दिस इवेंट मीन्स सेव दिस ट्रिगर। देन अगेन यू हैव टू क्रिएट अ न्यू ट्रिगर, अ न्यू टैग फॉर द व्यू आइटम। देन आप व्यू आइटम को ट्रैक करोगे, देन उसके आगे अलग से फिर से एक ट्रिगर बनाओगे। तो उस केस में क्या होगा कि अलग अलग इवेंट के लिए अलग अलग ट्रिगर्स फायर होंगे। तो गाइस इंस्टेड कि आप वो सारी चीज़ें मैनुअली इतना लंबा प्रोसेस करो, आई एम टेलिंग यू अ शॉर्ट ट्रिक। यहाँ पर आप एक ही वे में सारे जितने भी इवेंट्स हैं, जो जो इवेंट्स आपके लिए मेन हैं जिनको आप ट्रैक करना चाहते हो वो आप यहीं से ट्रैक कर सकते हो। तो गाइस उसके लिए क्या करना है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना। जो इवेंट्स जिस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, यू हैव टू चूज दोज इवेंट्स इन द सेम फॉर्मेट्स फ्रॉम ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फर्स्ट वी वांट टू सी, just see what are the things: items viewed, items added to cart, item purchase, item revenue. So मैं इसमें कुछ और इवेंट्स भी ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले व्यू आइटम, come to the Google Tag Manager, name it view item. Clear? Now use the pipe, okay, and use this regex also. You can just click on this regex. So the first item. Now let's come to the second item. View item list. If you want to track this thing, just copy it and come to here, paste it, then the same pipe, फिर आओ आप थर्ड पर, व्यू कार्ट, कॉपी इट। गाइस प्लीज़ इट इज़ अ केस सेंसिटिव, तो केस सेंसिटिव में अपनी मर्जी से टाइप मत करना, जैसा है आपको वैसे ही इवेंट्स ट्रांसफ़र होंगे इन द सेम मैनर। अगर आप स्मॉल और कैपिटल का कुछ भी चेंजेस करते हो तो ऑब्वियसली डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। देन लेट्स चूज़ ऐड टू कार्ट। आई वांट टू सी कि कितने ऐड टू कार्ट्स हुए हैं। सेम पाइप, देन लेट्स कम ऐड टू विश लिस्ट, कितने लोगों ने विश लिस्ट में ऐड किया है। लेट्स कम हियर एंड देन बिगिन चेकआउट, कॉपी, okay, same pipe, then come to the next part, purchase. Let's click on it, purchase, and let's use this one also, remove from cart. okay, मैं ये भी देखना चाहता हूँ। इसके साथ साथ एक लास्ट है जो रिफंड का है। मैं इतने सारे इवेंट्स को ट्रैक करना चाहता हूँ इन माई ई कॉमर्स। Done. These are all the events that I want to track, and let's come. Done. Okay, so let's save it. Alright guys, ये सेव हो चुका है, इवेंट हमारा है, ई कॉमर्स डेटा शेयर करेगा ये, एंड देन फाइनली सेव इट। ऑलराइट, नाउ लेट्स टेस्ट इट, और इसको पहले मैं प्रीव्यू करता हूँ, और प्रीव्यू करने के बाद लेट्स कनेक्ट इट। ऑलराइट गाइस, तो अब हमें क्या करना है, एक एक करके हम सारे जितने भी हमने इवेंट सेटअप किए हम उनको टेस्ट कर लेते हैं। व्यू आइटम, ऐड टू कार्ट, ऑर्डर, परचेज, ये सारा पार्ट हम कर लेते हैं। let me just click on one of the course, the dummy course. Let's just use the GTM fundamental course. Click on add to cart. Okay, all these event will going to track in the debug mode, and वो हम analytics में भी देखेंगे। And let me just use and just remove this. Let me just proceed to checkout.
and let me just enter the dummy information. Delhi, 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 110011, then phone 909090, then email address test@gmail.com, then username test12345, done. And then let's place an order. Alright, order is placed. Now let's come to the debug window. Okay, continue. So if you can see, let's move with the view item part. This is the cart part, and first let's see that which tags are firing on the view item. Alright, so here it is the link click, and this window start at the fundamental course. So let me just click. सो क्लिक में ई कॉमर्स डेटा जो हमने किया था वो फायर हुआ है, और इसमें एक बार चेक कर लेते हैं इवेंट कॉन्फ़िगरेशन, और लेट्स चेक द वैल्यूज़. सो दिस इज़ द वैल्यू, एंड ऑल्सो चेक द डेटा लेयर, द वेरिएबल्स. सो दीज आर ऑल द वेरिएबल्स जो वहाँ से पास ऑन हुए हैं, एड टू कार्ट एंड द थ्रेशोल्ड. दीज आर ऑल द टैग्स दैट आई हैव जस्ट मेंशन, जो मैं ऑलरेडी ट्रैक कर रहा हूँ. सो दीज आर ऑल द डेटा लेयर वेरिएबल्स जो ट्रैक किए जा रहे हैं. क्लियर. सो ये जो मेरा टैग है वो तो फायर हो रहा है. नाउ लेट्स कम कि हम आते हैं यहाँ पर कार्ट में. सो दिस इज़ द डेटा लेयर दैट इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड. complete Google search ads course, category online course, price, and all the things that are basically transferring from here, means from website to the Google Tag Manager, and we'll check it in Google Analytics too. Alright, and then finally purchase. Let's check कि जो मैंने purchase किया, this is the purchase tag, and purchase tag में let's see the e-commerce data tag is already fired. and कौन सी जो data है जो final हुआ है यहाँ पर, just see e-commerce, item ID this one, the item name this one, the price is 2499, and the same thing that we are just making a purchase on the website. It means all the data is being transferred from website to the Google Tag Manager. Now let's come to the analytics, and let's check in the real time whether data is going, means whether data is transferring or not. Alright, so let's come, just see home cart, checkout, complete, GTM fundamentals. So yes, data is basically getting transferred, but we want to check the values कि जो values है वो values transfer हो रही है नहीं हो रही. तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा debug mode में. तो debug mode में आने के लिए admin में आइए आप, और admin में आने के बाद there is an option of debug view. ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देखिए परचेज़ को बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक कन्वर्जन यहाँ पर अलॉट कर दिया है कि परचेज़ हुई है, तो मतलब एक कन्वर्जन हुआ है. तो लेट्स क्लिक ऑन द परचेज़. सो यू कैन सी करेंसी, debug mode, and what are the items. Let's come to the item, complete Google Tag Manager course, item ID, item name, item brand, and online course, price, this one, this is the main price, and the remaining zeros is basically added by default. What are the parameters? Let's come to the parameter, the value, see the value, the transaction ID, it is 1474. Let's check it over here also. So 1474, so it means our e-commerce data is now successfully transferring from our website to the Google Analytics with the help of Google Tag Manager. तो गाइस ऐसे आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट से डेटा लेयर की हेल्प से गूगल टैग मैनेजर के थ्रू गूगल एनालिटिक्स में डेटा ट्रांसफर कर सकते हो ऑल द ई-कॉमर्स वैल्यूज. सो इट इज़ for all the e-commerce value that we are getting the data on. And let's come to the debug view. This is the purchase thing, so we might be getting all other events name too. Let's see GTM click format, and we'll be getting the view item too, we'll be getting the checkout, we are getting this thing too. So let's click on this checkout, and the items, what items are getting checkout. So these are all the things that we are getting from our website. Okay, and again view item, the page view, user engagement, and all the things. Let's see.
ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारा व्यू आइटम का एक टैग और हमें देखना है। तो मेन थिंग इज़ कि जो हम काम कर रहे हैं, द पेज व्यू टैग इज़ बेसिकली ट्रांसफर्ड। जो पेज व्यू टैग है वो आ गया है यहाँ पर, एंड आई थिंक कार्ट वाला ऑप्शन भी आया होगा, आई थिंक दिस वन, दिस पेज व्यू, राइट नाउ इट इज़ काउंटेड एज अ पेज व्यू, and user properties, I think this is not the thing, page view cart, this one. Okay, so item view, cart view, begin checkout, purchase, all the events that we wanted to transfer, that we wanted to check in our Google Analytics 4 is now successfully transferring. तो गाइस ऐसे आप अपनी वेबसाइट के ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू हैं, जो वेरिएबल्स हैं हर प्रोडक्ट की, अपने प्राइसिंग है, उनका डेटा आप गूगल एनालिटिक्स 4 में ट्रांसफ़र कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर। और फाइनली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको, बिकॉज यू हैव चेक्ड कि आपके जो सारे टैग्स हैं वो सक्सेसफुली फायर हो रहे हैं और आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो रहा है इन गूगल एनालिटिक्स। नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट मेक इट सबमिट एंड पब्लिश, कंटिन्यू, ऑलराइट, डन। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी कैसे आप अपनी वेबसाइट का ई कॉमर्स डेटा गूगल एनालिटिक्स 4 में ट्रांसफ़र कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर। एंड गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अगर आपको अच्छी लगी, और जो आपकी लर्निंग है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो।